Hello everyone, my name is Harim Rahmani and you are watching Harim Rahmani Official. Today we are going to study about conditionals, what are conditional statements, how they are made, and what are the tenses which are used in conditional statements. First of all, conditional statements. There are four types of conditional statements. The first is zero condition, second is first condition, then second condition, then third condition. The first condition has two clauses, means conditional statements always have two clauses, one having condition and the other having result. The zero condition has two statements. Both statements are of present simple tense. The use of this condition is it's general use, okay? When something is obvious, when there is a scientific factual details are there, when the condition having the same results. For example, if you stand in the rain, you get wet. It is obvious. When you stand in the water, you get wet. It is obvious. It's fact, okay? And it's general truth that whensoever you are standing in the rain, you will get wet. This is what the condition is. This is the fact is. If you heat ice, it melts. Obviously, when you heat ice, it melts. जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है. This is obvious. So the zero condition has present simple plus present simple. In the first clause you are using if, and in the second clause you can see that I'm not using then, I'm just using comma. I'm just putting comma between both the clauses. इसको उर्दू में अगर आप ट्रांसलेट करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा. अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाते हैं. तो की जो ट्रांसलेशन है वो सिर्फ कॉमा से होगी. यूजुअली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं लोग इनको देन के साथ ट्रांसलेट कर लेते हैं, मगर आपने ऐसे नहीं करना. इट्स रॉन्ग. Then second condition, in second condition we use two sentences, two clauses. Present simple plus future simple tenses are used. If it rains, we will stay home. If you work hard, you will pass the examination. Use of this statement or use of this condition is a possible situation in the future predicting a likely result in the future. ये जैसे प्रेजेंट में, जैसे कि आप पॉसिबल, जो भी आप पॉसिबिलिटी है किसी काम की, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. द फर्स्ट वॉज जनरल ट्रूथ कि ऐसा होता है जब हम ऐसे करते हैं. लेकिन जब हम फर्स्ट कंडीशनल की तरफ जाते हैं तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा. जैसे कि अगर बारिश होगी तो हम घर पर रुक जाएंगे. इट्स a likely situation, a prediction is there कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग ऐसा कर लेंगे. ठीक है जी. Second condition is translated with or made with past simple plus future simple. It's the combination of past simple or past indefinite plus future simple or future indefinite. मगर आपने future simple के will और shall को would में change कर लेना है. देखें, very important thing, where to use this statement or where to use this condition. It's a hypothetical or unlikely situations, unreal or impossible or improbable situation now or in the future. Means the situation which is going on right now, this is unlikely situation, उसका इम्कान नहीं है. ये वो एक hypothetical, आप उसको जो है ना एक situation है कि जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इतने ज़्यादा इम्कान नहीं है. ठीक है कि बिल्कुल धूप निकली हुई है और आप कहते हैं जी अगर बारिश हुई तो फिर तो हम घर पर रुक जाएंगे. इम्कान ही नहीं है बारिश होने के. सेम द केस इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. कि अगर मुझे लॉटरी मेरी निकल आई तो मैं दुनिया का चक्कर लगाऊंगा. इसके
पॉसिबल नहीं है, इम्कान नहीं है लॉटरी निकलने के, तो मैं दुनिया के इर्द गिर्द भी नहीं जा सकती या नहीं जाऊंगी. ओके, सो इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्ज़ाम. अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे. मीन्स कोई इम्कान नहीं है, तुम्हारे कोई काम नहीं लग रहा है कि तुम मेहनत करने वाले बंदे हो. ठीक है, तुम मेहनत नहीं करो, तुम एक जो है वो काहिल इंसान हो, तुमने मेहनत नहीं करनी, मुझे पता है तुमने मेहनत नहीं करनी, तो इसलिए तुम पास भी नहीं होगे. तो अगर तुमने मेहनत की तो फिर हो सकता है तुम पास हो जाओ, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं. एंड द third condition is the combination of past perfect plus future perfect. And again, future perfect will have and shall have, or future perfect will be changed into would have. अब यहाँ पर जो है you are imagining a different past. मतलब जो कुछ पास्ट में हो चुका, अब आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर वो ना हुआ होता. ठीक है, यानी हो चुका जो भी होना था, अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसे भी ना होता. ठीक है, अगर बारिश हुई होती तो हम भी रुक जाते, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते. इफ़ इट हैड रेन्ड वी वुड हैव स्टेड एट होम. अगर बारिश होती तो हम घर पर रुक जाते. इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन. अगर तुमने मेहनत की होती या अगर तुम मेहनत करते तो तुम एग्ज़ाम में पास हो जाते. Again I'm saying that imaginary past, whatever has happened in the past you want to change, you are just thinking about some opposite situations. Okay, कि जो कुछ हो चुका है उससे अलग situation होती तो फिर क्या होता. So these are the 4 kinds of conditional statements, and I'm hopeful that this video will be useful for you people. You people might have learned something over here. If you have learned something, do comment, like the video, subscribe my channel, and share the video as well. One more thing, if you have certain questions, if you want to learn something, some rules or some tactics for learning English or learning grammar as well, means language or grammar whatsoever, you can ask me questions in the comment section. Take care. Allah Hafiz.